Hey everyone, in this video we will talk about quicksort algorithm. क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, फिर हम सीखेंगे कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द फर्स्ट पॉइंट हियर इज इट इज कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम. It is comparison based sorting algorithm. Suppose we take some elements here. Now, what is comparison based sorting algorithm? We need to compare the elements of array. We need to compare the elements of array to find the sorted array. This is comparison based sorting algorithm. Now, next point is it is one of the efficient and practical problem solving algorithm. It is one of the efficient and practical problem solving algorithm. Why? One of the reason is it is in place. It is in place. In place means we don't need an auxiliary space to store the array elements. We don't need it. We don't need the auxiliary space to store the elements. We may need space for recursive function calls. Okay, so for n elements we need only order of n space. We don't need any auxiliary space. Now next second point is the time complexity. The time complexity of quicksort algorithm is order of n log n in best case and in average case. In worst case it is order of n square, but we may avoid it, we may neglect it by using partition algorithm efficiently. So it is one of the efficient problem solving algorithm. Why? Because it is in place and the time complexity is n log n in most of the cases. Also, if it is n square, we can avoid it by using partition algorithm efficiently sometimes. Okay, next point is it uses divide and conquer technique. Now, what is divide and conquer technique? Divide and conquer technique is if we break our problem, if we break our problem into subproblems, it is very easy to solve the subproblems. If it is not easy, then break it again. Break it until it is easy to solve. Okay, so we break the problem into subproblems until we are able to solve the subproblems individually. Okay, so after breaking the problems into subproblems, after dividing the problem into subproblems, we solve them individually. And after solving them individually, we combine them. That is divide and conquer technique. What is divide and conquer technique? We break the problem into subproblems. Until we are able to solve them. After solving the subproblems, combine the solutions of subproblems to get the solution of big problem. Okay, next point is it is not stable. Why I am saying this? It is not stable, or we can say it is unstable. Same meaning. Some people say non-stable, some people say unstable. Okay, why it is unstable? It is unstable because let me take a simple example here. Suppose the array elements we have are 1, 2, 5, 6, 5, 4. Now 5 is repeating. Okay, 5 is repeating. Let me take it is A, let me take it is B. Okay, for the sake of simplicity I am taking it as A and B. Okay, so 5 is repeating element. Now what is unstable? Unstable simply means that if
after sorting the array, let me sort this. 1 2 4 6 1 2 4, okay, 1 2 4 5, okay, then 5, then 6. I think this is the correct order. But unstable means what? It is A, it is B, or it is B or it is A. Means if the elements are repeated, we cannot say which element will come first. Means if the elements are repeated, 5 is repeated here, 5 is repeated here, so we cannot say which 5 will come first, which 5 will come later. So it is unstable. Means the order of 5, the order of repeated elements is not fixed, it is not stable. Okay, so in simple words, if I say unstable means is the order or the sequence, the order or the sequence of repeated elements, the order of repeated elements or the sequence of repeated elements may vary. It may not be same as the input array. Okay, so these are our 4 points. Now next point is it is in place. We have already seen it is in place. In place means we don't need an auxiliary space. We have already seen this. It is in place. We don't need an auxiliary space. We don't need an auxiliary space for storing the array elements. Okay, next. Now these are our 5 points. These are our basic 5 points. Okay, it is comparison based sorting algorithm. It is one of the efficient and practical problem solving algorithm. It works on divide and conquer technique. It is unstable. It is in place. Okay, these are 5 small basic points. Now next we will see the implementation part of Quicksort. Now what is before implementing Quicksort, we need to know about partition algorithm. Before implementing Quicksort, we need to know about partition algorithm. पार्टीशन एल्गोरिथम क्या होता है हमें पता होना चाहिए. ओके, अगर हमें पार्टीशन एल्गोरिथम पता है तो हमें क्विकसॉर्ट आता है. नाउ आफ्टर यूजिंग क्विकसॉर्ट I can say it is heart of quicksort. Why I am saying this, you can find out later. You can easily find out later. Partition algorithm is the heart of Quicksort. After using partition algorithm, I can say this. Now let me take some example. Whatever here is right. Now let me take some example. Okay. यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है हम बाद में देखते हैं. पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, पार्टीशन एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है वो हम देखते हैं. सो अगेन आई एम टेकिंग सम एलिमेंट्स हियर. ओके, पार्टीशन एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है. पार्टीशन एल्गोरिथम कहता है कि हम किसी भी अरे एलिमेंट को एज अ पाइवट ले लेते हैं. सपोज आई एम टेकिंग 9 एज अ पाइवट. ओके, suppose I am taking 9 as a pivot. It is 9 as a pivot element. I am taking 9 as a pivot element. Okay, so partition algorithm ये कहता है कि जो हमारे elements हैं, 9 is a pivot element. Okay, जो हमारे elements हैं, जो भी pivot element से छोटे element हैं वो हमारे pivot element से पहले आने चाहिए. जो हमारे pivot element से बड़े element हैं वो हमारे पाइवट एलिमेंट के बाद आने चाहिए. यानी कि जो भी पाइवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट हैं वो हमारे 9 से पहले आएंगे, यानी कि 9 के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे. और जो हमारे पाइवट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट हैं वो हमारे 9 के राइट में आएंगे. सिंपल. व्हाट इज पार्टीशन एल्गोरिथम? पार्टीशन एल्गोरिथम कहता है कि कोई भी एक एलिमेंट को पाइवट लो और उससे छोटे जो भी एलिमेंट्स होंगे
वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे और उससे बड़े जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके राइट हैंड साइड में आ जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज लेट मी, अब हम पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को. जो मैंने बताया बस वही लिखा हुआ है. सिलेक्ट एन एरे एलिमेंट एज पाइवट. हमने किसी भी एरे एलिमेंट को पाइवट सिलेक्ट कर लिया. पुट पाइवट एलिमेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉर्टेड एरे. पुट पाइवट एलिमेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉर्टेड एरे मतलब वही कि 9 से छोटे सारे 9 से पहले आएंगे और 9 से बड़े सारे 9 के बाद में आएंगे, यानी कि हम 9 को सॉर्टेड ऑर्डर में रख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, such that the elements smaller than or equal to pivot element will be on LHS of the pivot element. The smaller elements then the pivot element will be come before pivot element. जो भी pivot element से छोटे element होंगे वो हमारे pivot element से पहले आएंगे और जो भी elements pivot element से बड़े होंगे वो हमारे pivot element के बाद आएंगे. बस यही लिखा है इसमें. Okay, you can read it also. And the elements larger than pivot element will be on RHS of the pivot element. जो भी एलिमेंट हमारे pivot element से बड़े होंगे वो हमारे pivot element के बाद आएंगे. सिंपल पार्टीशन एल्गोरिथम क्या कहते हैं? सिंपल, pivot element को सिलेक्ट करेंगे, उससे छोटे जो भी एलिमेंट होंगे वो हमारे LHS में आएंगे, उससे बड़े जो भी एलिमेंट होंगे वो हमारे RHS में आएंगे. ओके, नेक्स्ट इज देयर आर मैनी वेज. हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, हमने देखा कि हम किसी भी एलिमेंट को एज अ पाइवट सिलेक्ट करते हैं. तो पाइवट सिलेक्शन कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट, पाइवट सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? देयर आर मैनी वेज टू सिलेक्ट पाइवट एलिमेंट. यू कैन सिलेक्ट इन एनी वे अकॉर्डिंग टू द पाइवट सिलेक्शन. The partition algorithm will work. According to the pivot selection, the partition algorithm will work. Okay, there are many ways. I have written some of them. There are many ways for pivot selection. You can select pivots in any way. There are many ways. So I have taken some ways. First is pick first element as pivot. अगर मैं पहले एलिमेंट को पाइवट सिलेक्ट करता हूँ तो. नेक्स्ट इज अगर मैं लास्ट एलिमेंट को पाइवट लेता हूँ तो. अगर मैं पहले एलिमेंट फर्स्ट पॉइंट इज अगर मैं पहले एलिमेंट को पाइवट लेता हूँ तो. अगर मैं लास्ट एलिमेंट को पाइवट लेता हूँ तो. अगर मैं मीडियन एलिमेंट को पाइवट लेता हूँ तो. अगर मैं किसी भी रैंडम नंबर को पाइवट लेता हूँ तो. अकॉर्डिंग टू द पाइवट सिलेक्शन, जैसे जैसे हम पाइवट सिलेक्शन करेंगे वैसे वैसे हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम वर्क करेगा. ओके, वैसे वैसे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वेरी करेगी. नाउ नेक्स्ट, पिक मिडिल एलिमेंट एज पाइवट. मिडिल एलिमेंट को हम पाइवट ले लें. एन बाई 10th एलिमेंट को हम पाइवट ले लें. एन बाई 9th एलिमेंट को पाइवट ले लें. 5th एलिमेंट को पाइवट ले लें. 6th एलिमेंट को पाइवट ले लें. एनी वे सिलेक्ट पाइवट इन एनी वे. बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. वी हैव टू टेक केयर ऑफ एफिशिएंसी. हमें एफिशिएंट चाहिए, प्रोग्राम चाहिए. हमें पाइवट सिलेक्शन ऐसा चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम आए, हमारा प्रोग्राम ईजी हो. ओके, नेक्स्ट, अब पाइवट सिलेक्शन वी विल टेक टू ऑफ देम. We will take first element as pivot. Next, pick last element as pivot. We will implement two of them. पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट लेके पार्टीशन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे. फिर हम देखेंगे लास्ट एलिमेंट को पाइवट लेकर पार्टीशन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट, स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट, टेक फर्स्ट एलिमेंट एज पाइवट. मैं फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट ले रहा हूं. टेक फर्स्ट एलिमेंट एज पाइवट. ओके, सो लेट मी राइट हियर. सपोज मैं फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट ले रहा हूं. ओके, मैं हाथ से लेता हूं. ये हमारा क्या है? पाइवट एलिमेंट है. ओके, नाउ मैं लोअर इंडेक्स को लेट मी टेक लोअर इंडेक्स एज पी. मैं लोअर इंडेक्स को पी ले रहा हूं और हायर इंडेक्स को क्यू ले रहा हूं. ओके, मैं लोअर इंडेक्स को पी ले रहा हूं और हायर इंडेक्स को क्यू ले रहा हूं. नाउ अगेन व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, ओके, मैं लोअर इंडेक्स को पी ले रहा हूं. आई एम राइटिंग इट हियर.
छोटा सा लिख दो। ओके, अब इसको मैं आई लेता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को, लोअर इंडेक्स को मैं पी भी ले रहा हूँ, आई भी ले रहा हूँ। सेकंड इंडेक्स को मैं जे ले लेता हूँ, सेकंड इंडेक्स को मैं जे ले लेता हूँ। ओके, मैं फर्स्ट इंडेक्स को पाइवट ले रहा हूँ। ओके, टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट एज पाइवट, मैं फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट ले रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स को पी ले रहा हूँ, लास्ट इंडेक्स को क्यू ले रहा हूँ, और फर्स्ट इंडेक्स को मैं आई भी ले रहा हूँ, एंड टेकिंग सेकंड इंडेक्स एज जे। अब हमें करना क्या है, देखो हमने जब फर्स्ट एलिमेंट पाइवट लिया तो हमें जे लूप चलाना है, एक लूप चलाना है हमें टिल द एंड ऑफ द एरे। हमने जे हमने लिया एरे का लूप चलाने के लिए। ओके, सो सेकेंड एलिमेंट से मैं लूप चलाना शुरू करूंगा ना, और अब मैं जे को कंपेयर करूंगा पाइवट एलिमेंट से। सो कंपेयर जे, कंपेयर इन एलिमेंट एट इंडेक्स जे, कंपेयर एलिमेंट एट इंडेक्स जे इंडेक्स पे एलिमेंट जो है उसको मैं पाइवट से कंपेयर करूंगा। पाइवट हमारा क्या है, पाइवट हमारा 5 है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पाइवट हमारा 5 है। ओके, नाउ द एलिमेंट एट जे इंडेक्स इज 6, द एलिमेंट एट जे इंडेक्स इज 6, कंपेयर 6 विथ 5, इज 6 इज स्मॉलर देन 5, नो। कंपेयर करेंगे जे के एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट से। अगर पाइवट जे को कंपेयर करेंगे पाइवट एलिमेंट से, अगर हमारा एलिमेंट एट जेथ पोजीशन स्मॉलर है पाइवट एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं आगे। अभी कंपेयर करते हैं, 6 इज स्मॉलर देन 5, नो। अगर नहीं है तो जस्ट सिंपली इंक्रीमेंट जे। कंपेयर एलिमेंट एट जे पोजीशन विथ पाइवट एलिमेंट। If it is smaller than pivot, then we will do further. If it is not smaller than pivot element, skip. Now the value of j is 4. The value of j is 4. The value of jth element is 4. Now compare 4 with 5. Compare 4 with 5. क्या 4 5 से छोटा है? हाँ है। क्या 4 5 से छोटा है? हाँ है। तो हम क्या करेंगे, हम what we will do simply, हम सबसे पहले i को अपडेट करेंगे, सबसे पहले हम i को इंक्रीमेंट करेंगे। क्या j की वैल्यू पाइवट एलिमेंट से छोटी है? हाँ है। अगर है तो हम पहले i को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर द वैल्यू एट स्वैप द वैल्यू एट j एंड i, हम इसको हम सिंपली स्वैप कर देंगे। Now it will be 6, it will be 4. हमने अभी तक क्या किया, हमने J एक लूप चलाया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम J की वैल्यू को, जो J इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको पाइवट सिलेक्शन से, पाइवट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारा पाइवट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट है J, तो हम उसे पहले I को इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर स्वैप कर देंगे I और J की वैल्यूज़ को। ओके, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट ट्राई टू लर्न इट। ठीक है, अगर नहीं समझ में कोई इशू नहीं है, छोटी लर्न। नेक्स्ट नाउ वी हैव स्वैप्ड द वैल्यू ऑफ I and J. Okay, 4 and 6. Now the values are here are 4 and here is 6. Now increment J. Now after incrementing J, compare. Is 2 is smaller than 5? क्या 2 हमारा 5 से छोटा है? हाँ है। अगर है, क्या 2 हमारा 5 से छोटा है? हाँ है। अगर है तो इंक्रीमेंट I, क्या J हमारा, क्या 2 हमारा 5 से छोटा है? हाँ है। इंक्रीमेंट I फर्स्ट, इट इज अ मेजर थिंग। इंक्रीमेंट I, then swap the values of I and J. It will be 6, it will be 2. Okay, again doing the same thing. Increment J. Okay, now 5 is smaller than 5? No. 5 is equals to 5? Yes. 5 is equals to 5? Yes. Again swap.
बट बिफोर स्वैपिंग व्हाट वी विल डू, इंक्रीमेंट आई। हमें आई को पहले इंक्रीमेंट करना है और स्वैप ऑपरेशन बाद में परफॉर्म करना है। हमें आई को इंक्रीमेंट पहले करना है और स्वैप ऑपरेशन बाद में परफॉर्म करना है। कब? अगर हमारा एलिमेंट छोटा है या इक्वल है पाइवट एलिमेंट के। अगर हमारा एलिमेंट छोटा है या इक्वल है पाइवट एलिमेंट के। ओके, नाउ इट विल बी 6, it will be 5. Okay, now again increment j, again increment j, increment j। आफ्टर इंक्रीमेंटिंग क्या 8 5 से छोटा है? नहीं है। क्या 8 5 से छोटा है? नहीं है, कुछ नहीं करना। क्या 8 5 से छोटा है? नहीं है, कुछ नहीं करना। जस्ट इंक्रीमेंट j, जस्ट इंक्रीमेंट j। अगर हमारा एलिमेंट बड़ा है पाइवट एलिमेंट से, कुछ नहीं करना, इंक्रीमेंट j, इंक्रीमेंट j। ओके, आई एम इंक्रीमेंटिंग j। आफ्टर इंक्रीमेंटेशन नाउ द वैल्यू एट j इज 1। अब j इंडेक्स पे वैल्यू क्या है? 1 है। j इंडेक्स पर वैल्यू क्या है? 1 है। हम क्या करेंगे? हम नाउ चेक, कंपेयर 1 विथ 5, कंपेयर 1 विथ 5। 1 छोटा है? हाँ। 1 छोटा है? हाँ। क्या करेंगे? सबसे पहले इंक्रीमेंट आई। फर्स्ट वी विल इंक्रीमेंट आई। ओके, नाउ स्वैप द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, स्वैप द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। ओके, नाउ नेक्स्ट compare 3। okay, now first increment j। okay, first increment j। after incrementing j, compare the value क्या 3 हमारा 5 से छोटा है? क्या 3 हमारा 5 से छोटा है? हाँ है। क्या 3 हमारा 5 से छोटा है? हाँ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई, increment the value of I, now what we will do, we will swap the values at I and j, swap the values of I and j, swap the values of index I and j। okay, now j reaches to the last position, अब क्या करना है हमें? अब एक बार देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास। देखो यहाँ पर तो ये 5 ही रहेगा, ये हमारा 4 आया, 2 आया, 5 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया। अब हम क्या करेंगे? द मेजर पॉइंट हियर इज स्वैप द वैल्यू एट पोजिशन आई विद द पाइवट एलिमेंट। हम इसको स्वैप कर देंगे, हम 3 और 5 को स्वैप कर देंगे। after reaches the last element, after the j loop ends, हम स्वैप कर देंगे the value of I and the value of pivot element। now after swapping what will be the value? After swapping what will be the value? It will be 3। okay, now 4, now 2, now 5, now 1 is here, now we have swapped the value, so 5 will be here, now 6 will be here, now 8 will be here। okay, so let me take 5 is repeating element। okay, so let me take it is a, okay, it is b। for sake of simplicity I am taking 5a and 5b, 5a and 5b। now this 5 is 5a, this 5 was 5b। okay, so our elements after applying partition algorithm for the very first time is 3 4 2 5 1 5 6 8। हमने एक पॉइंट पढ़ा था पहले, क्या कि द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब अगर रिपीटेड एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं तो हमारा ऑर्डर क्या चेंज हो सकता है। सी वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट
5 here is 5a come first before 5b, but after applying partition algorithm, 5b come first, 5a come next. ओके सो अब देखते हैं क्या हमारे पार्टीशन एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. सी इट वाज आवर पार्टीशन, इट वाज आवर पाइवट एलिमेंट. ओके ये हमारा पाइवट एलिमेंट था. क्या पाइवट एलिमेंट के लेफ्ट में सारे एलिमेंट पाइवट एलिमेंट से छोटे या इक्वल हैं? क्या पाइवट एलिमेंट के राइट में सारे एलिमेंट पाइवट एलिमेंट से बड़े हैं? यस, वी कैन इजीली फिगर आउट. 3 is smaller than 5, yes. 4 is smaller than 5, yes. 2 is smaller than 5, yes. 5 is smaller than equals to 5, yes. 1 is smaller than 5, yes. 6 is greater than 5, yes. 8 is greater than 5, yes. Simply what we have to do is, what we have done is, the elements smaller than pivot element will come before the pivot element, and the elements after pivot element will come after the pivot element. Now what we have to do, again let me erase this. Again what we have to do, now it is one sub array. Okay, it is another sub array. Now again we will use the same thing. We will again apply partition algorithm to the both sub arrays. Now next again we will implement partition algorithm in sub levels, again in next level, until it will be individually solved. Okay, so let me solve this one also. Okay, इसको भी मैं solve करता हूँ. There is no need to solve again, but same thing, same work we will done. We will take, it is I. Okay, we will take first element as pivot. See, the important point here is, if you are taking first element as pivot in the first level, if you are taking the first element in the pivot, if you are taking the first element as a pivot in the very first level, we are taking first element as the pivot. In the first level we are taking first element as the pivot. Same thing we will do on the next levels also. In the second level also we will take first element as the pivot. In the third level also we will take first element as the pivot. Means same work we are doing in the sub levels also. So now I am doing this. It is pivot element. Okay, we know already it. We are taking it as I. Okay, this is our J. Now 3 is our pivot element. Compare 4 with 3. क्या 4 3 से छोटा है? नहीं. Simply increment J. क्या 2 3 से छोटा है? हाँ. Now what we will do? We will first increment the value of I. Then what we will do? We will simply swap. The values at array J and array I. Again next, increment J. I am incrementing J. Now J is this. क्या 5 3 से छोटा है? नहीं. क्या 5 3 से छोटा है? नहीं. Nothing to do. Okay, now at last what we will do? J हमारा लास्ट एलिमेंट तक पहुंच चुका है. अब हम okay, there is one more element. Now the value at J is 1. Okay, compare J value with 3. Compare 1 with 3. क्या 1 3 से छोटा है? हाँ है. क्या 1 3 से छोटा है? हाँ है. तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट इंक्रीमेंट I. Now swap the values at I and J. Swap it. Okay, so J reaches the last element. J लास्ट एलिमेंट तक पहुंच चुका है. अब हम क्या करेंगे? Now we will swap the values of element. We will swap the values of
We will swap the values of pivot element and the ith element. Okay, we will swap the values of pivot element and the I element. So we will swap 3 and 1. We will swap 3 and 1. Why 1? Because I value is 1 here. So after swapping, it will be 1. I am taking red color. It will be 1. It will be 3, 2. It will be 3. It will be 5. It will be 4. See, our pivot element was 3. Our pivot element was 3. 3 हमारा pivot element था. ओके, 3 हमारा pivot element था. अब हम देखते हैं पार्टीशन एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. क्या पाइवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में हैं? 1 इज स्मॉलर देन 3, यस. 2 इज स्मॉलर देन 3, यस. क्या पाइवट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट राइट साइड में हैं? यस. 5 इज ग्रेटर देन 3, यस. 4 इज ग्रेटर देन 3, यस. सी द order of small elements may not be sorted. The order of small elements or the order of larger elements. 3 पाइवट एलिमेंट है. 3 इज अ पाइवट एलिमेंट. 3 से छोटे एलिमेंट्स LHS में आएंगे, बट हो सकता है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो. That's why we are using divide and conquer. 3 पाइवट एलिमेंट है, बट हो सकता है कि जो 3 के LHS में है और RHS में है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो. That's why we are using divide and conquer. We are breaking the problem into sub problem. We are breaking them to sort them. See, 1 and 2 is in sorted order, but 5 and 4 are not in sorted order. Again we are using partition algorithm. Again we are using partition algorithm. So we will do this work again and again until the elements of array will be completely sorted. Okay. So this was about partition algorithm when we are taking first element as pivot. Okay, again I am repeating. What we have to do? First we have to select pivot element. We are taking first element as pivot. Again, take I as first element. Take second element as j. Take second element as j and run the loop until the last element. हम j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे until the last element. After first compare the value of j with pivot element. If it is smaller than pivot element, simply increment I first. Then swap the values at array j and array I. I hope it is clear. If it is not clear, this is for you. If it is not clear, this is for you. I have written all the steps which are required. Now take first element as pivot. This is the first thing which we have to do. Take first element as pivot. Now second thing is take I equals to p equals to starting index. Take I equals to p equals to starting index. Take I equals to p equals to starting index. That we had done. Now take second index as j. Next, compare. This is the important part. This is the important part. The major part is this only. Now compare array j. Compare the value at array index j. With pivot element. Compare the value at array index j with pivot element. If it is smaller than or equals to pivot element. If it is smaller than or equals to pivot element, increment I first. See, I have highlighted it here. I have highlighted it in red color. Means it is important.
I have highlighted it in red color, means it is important. These are the major steps. Increment I first, then swap the value of array I and array j. See here 4 was smaller than 5. Increment I first, incremented I first, then swap the values of I and j. Then swap the values of I and j. Here you can see 4 and 6. Then swap the values of I and j. Okay. So compare array j with pivot element. Compare array j with pivot element. If it is smaller than or equals to pivot element, increment I first. Increment I first, then swap the values of array I and array j. Then swap the values of array I and array j. Now increment j. If it is greater than pivot element, no need to do anything. Simply increment j. If the element is greater than pivot element, simply increment j. Again follow step 4 and 5. Follow step 4 and 5 until what? Until j reaches the last element. Follow step 4 and 5 until j reaches the last element. Now we have already done this. And increment j, compare increment j until j reaches the last element. Here 3 is the last element. After 3 nobody is there, so we have to go until last element. Now at the end what we have to do, here I have also highlighted this. It is important. I have also highlighted this, means it is important. After running the whole loop, we have to increment the values at position I and at pivot element. Simply nothing to do, simply replace, simply swap the values of position I with the pivot element. Means swap the values, simply swap 3 and 5. Simple. Swap 3 and 5. Swap pivot element. This is nothing but a pivot element. I repeat, nothing but a pivot element. We have taken first element as pivot. P is the starting index. So starting index means starting element is pivot only. So swap the value at array I and pivot element. Now I think it is clear. It is almost clear. I hope it is almost clear. If not clear, again follow these steps. Take an example and follow these steps. Now here is the pseudocode. Pseudocode means what? It is a basic code how it is working. Simple. One or two changes may be there, but you can follow it. Okay, almost. Whatever steps are written here are implementing here. Whatever steps I have written here, only those I am following here. First, I am passing array. This is the starting index. This is the ending index. Okay. I am selecting starting element as pivot. I equals to P. I am running the j loop from second element. See, starting index plus 1 from second element. Up to when? Up to till when? Until when? Until the last element. P is the starting index. Okay. P is the starting index I am writing here. And Q is the last index. Okay. Q is the last index. Okay. So from second element to last, I'm comparing array j. I'm comparing array j with pivot. If it is smaller than pivot element, simply increment I first, then swap the values of I and j. Increment I first, swap the values of I and j. Running the loop again and again until the last element. We'll do same thing until last element. Now at last what we will do? We will simply swap the value of pivot element and element at index I. Okay.
So this is the basic simple code. I hope you get it. This is the basic simple code. Okay, so till now we have seen if we take first element as pivot, how partition algorithm works. Now, if we take last element as pivot, how partition algorithm will work. So we take 3 as pivot element. Okay, we are taking 3 as pivot element, means last element as pivot element. So now take first element as I and j. Take first element as I and j. Now compare, same thing we are doing. Whatever we have done in first element as pivot, same we are doing, but in a little changes. Okay, so compare 5 with 3. Compare 5 with 3. Is 5 smaller than 3? No. So increment j. Compare 6. Compare 6 with 3. Compare 6 with 3. क्या 6 3 से छोटा है? नहीं. Increment j. Same thing we are doing. Compare 4 with 3. क्या 4 3 से छोटा है? नहीं. Increment j. Compare 2 with 3. क्या 2 3 से छोटा है? Yes. क्या 2 3 से छोटा है? Yes. So now in the previous method, when we take first element as pivot, what we have done is we have first incremented I. We had first incremented I, but if we take last element as a pivot, अगर हम last element ले रहे हैं pivot, अगर last element को pivot ले रहे हैं तो हम पहले हम स्वैप करेंगे. किसको? पहले हम स्वैप करेंगे एलिमेंट एट पोजिशन j एंड एलिमेंट एट पोजिशन i. फर्स्ट स्वैप इट. ओके, आफ्टर स्वैपिंग इंक्रीमेंट i. कंपेयर करेंगे पहले हम, क्या हमारा एलिमेंट पाइवट एलिमेंट से छोटा है? हाँ है. अगर है तो हम पहले स्वैप कर देंगे एरे i को और एरे j को, फिर इंक्रीमेंट करेंगे i को. कंपेयर करेंगे एलिमेंट एट पोजीशन j एंड एलिमेंट एंड पाइवट एलिमेंट. अगर हमारा एलिमेंट छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम उसे स्वैप कर देंगे ith पोजीशन के साथ. आफ्टर स्वैपिंग वी विल इंक्रीमेंट. After swapping we will increment. In the last method, first we have done incrementing then swapping, but in this method we will swap first. पहले हम swap करेंगे किसको 5 को और 2 को swap करते हैं. Now again increment j. Now क्या 5 3 से छोटा है? नहीं. क्या 5 3 से छोटा है? नहीं. Increment j. क्या 8 3 से छोटा है? नहीं. क्या 8 3 से छोटा है? नहीं. इंक्रीमेंट j. j लूप हम कब तक चलाएंगे? टिल द सेकेंड लास्ट एलिमेंट. ओके, टिल द सेकेंड लास्ट एलिमेंट. नाउ द वैल्यू ऑफ j इज 1 को हम कंपेयर करेंगे 3 से. क्या 1 3 से छोटा है? हाँ है. क्या 1 3 से छोटा है? हाँ है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्वैप कर देंगे. इट इज 1, इट इज 6. ओके, हम स्वैप कर देंगे. नाउ इंक्रीमेंट कर देंगे अब i को. नाउ हम j लूप कब तक चलाएंगे? सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक. अब आफ्टर रनिंग द होल j लूप, जो हमारी i की वैल्यू है, जो हमारी i है हमारा ये. ओके, i है हमारा ये, पाइवट एलिमेंट है हमारा ये 3. हम इसको स्वैप कर देंगे. सेम थिंग लास्ट टाइम ऑल्सो वी हैव डन सेम थिंग, दिस टाइम ऑल्सो वी हैव टू डू सेम थिंग. बस यहाँ पर फर्क था. ओके, सो स्वैप, इट विल बी 3, इट विल बी 4. नाउ व्हाट इज द एरे आफ्टर सॉर्टिंग? 2 1 3 5 5 8 6 4.
it was our pivot element, 3 was our pivot element. So we will check the property of partition algorithm, is it satisfying or not. So the left hand side element of, or we can say the elements before pivot element are smaller than 3 or not, are smaller than pivot element or not. 2 is smaller than 3, yes. 1 is smaller than 3, yes. 5 is greater than 3, yes. 5 is greater than 3, yes. 8 is greater than 3, yes. 6 is greater than 3, yes. 4 is greater than 3, yes. The only property here is the elements smaller than pivot element will be before the pivot element, and the elements after pivot element will be the larger elements. Now again at the second level also we will here you doing partition, we will here doing partition. Same thing, whatever we have applied above, same thing we will done here. Again after dividing, same thing we will done. We will take this element as pivot, we will take this as I and j, and then comparing with the pivot element, again we will take it as I and j, we will take it as pivot element. See, 3 is sorted here, 3 is sorted. We have to sort left and right side elements of pivot element. We have to sort the before elements and the after elements after pivot. Same thing we will do again and again. Until our array is completely sorted. This is the way. Okay. We are taking last element as pivot here. What we have done, we have taken last element as pivot. We have taken I and j as first element. We are running a j loop. We are comparing the elements with pivot element. If it is same thing, if it is smaller than pivot element, simply swap the values and increment I value. If it is greater than pivot element, nothing to do, skip, increment j. Same thing. The only difference here is in first, if we are taking first element as pivot, let me show you. If we are taking first element as pivot, we have to first increment. If we are taking first element as a pivot and the element is smaller than equals to pivot element, first we are incrementing, then swapping. But let me show you the steps here. But if we are taking last element as pivot, we are doing swapping first and incrementing next. Now here are the steps. Whatever we have done here are the steps. First step is take last element as pivot. Yes, we have taken 3 as a pivot element. Next is take I equals to j equals to starting index. Starting index is our this. Take I equals to j equals to starting index. Next. Now compare array j with pivot element. Compare 5 with 3. Compare 5 with 3. If it is smaller than equals to pivot element, if it is smaller than equals to pivot element, if it is smaller than or equals to pivot element, we have to swap first. This is the measure. Here you can see these are important points. These are important points. I have highlighted it in red color. These are important points. First we have to swap, then increment. In if we are taking last element as pivot. First we have to done swap, then increment I. First we have done swap, then incremented I. If the element is greater than pivot element, nothing to do. If the element, see here 5 is greater than 3, nothing to do. Just increment the value of j, just incrementing j loop. 6 is greater than 3, increment j. 4 is greater than 3, increment j. 2 is smaller than 3, is smaller than. Then first swap, then increment. Same thing.
increment j. Now increment j. After swapping and incrementing, increment j. Follow these steps until when? Until second last element. Until second last element. Until here only. No need to compare it here, because we have already selected it as pivot. We are comparing it with other elements. So why to take it? Compare only till the second last element. Now next, at the end, when j reaches the second last element, at the end, what we have to do? We have to just swap the pivot element with the ith position element. Same step. We have done same step here. We are doing same step here. If we take first element as pivot or last element as pivot, same thing we have to do. At the last, we have to swap the pivot element and the element at index I. Now these are the steps. Again I am writing the pseudocode. This is our pseudocode. Pseudocode for what? When we are taking last element as pivot. Last element as pivot. This is pseudocode. See, we have taken array. We have taken P and Q. P is the starting address. Q is the ending address. We have taken I equals to J equals to P, means starting address only. We have taken pivot element. Q is the last index. So we have taken the last element as pivot element. We are starting here is the point. I can say I have taken 0 as the starting address. That's why I'm writing it 0 here. I have taken 0 as from starting to ending, -1, from starting to second last element. Okay, so from starting to second last element, I have taken this. So compare only. See, these are the major points here. These are the major points here. These are the major points here. Whatever I have written here, same thing I have done here. Okay. Next. We have taken two cases. When we take first element as pivot, when we take last element as pivot. Okay. So now how to use partition algorithm? We will see here. We have taken quickshort function. If starting index, what does it mean? It means only there are only one element. There is only one element. If there is only one element, no need to sort. What you will sort here? Nothing. So if there is only one element, simply return it. Else we will apply partition algorithm. Okay. So we will apply partition algorithm here. It will take order of n time. It will take order of one time. Simply only one statement. It will take order of one time. Partition algorithm will take order of n time. Now what here what we are doing? We are dividing. See, if k is our pivot element. Suppose k is our pivot element. After partition, here k minus 1 elements will be there. Okay. After partition, here k minus 1 elements will be there. Here q minus k elements will be there. Okay. Suppose there are 10 elements. I am writing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So here, this is our pivot element. Here k minus 1 element will be there. Here q minus k element will be there. K is what? Q is what? Q is 10. K is 5. So 5 elements are there. K is 5 minus 1, 4 elements are there. Okay. So here k minus 1 elements will be there. Here q minus 1 elements will be there.
Now if we talk about time complexity, of quicksort algorithm, it is a recurrence relation. See, order of n time partition, let me write. See, k minus p time, p is a starting address. Okay, I am taking here as 1, here is a 10, starting address as 1, ending address as 10. Okay, so k is our pivot element. After partition, the left side will be k minus p elements and the right side will be q minus k elements. And order of n, this is the partition algorithm time. Partition algorithm will take order of n time at every level. At every level it will take order of n, order of n, order of n. Okay, now this is pivot selection time. Pivot selection time, it may be order of 1, it may be order of n, depending upon how you are selecting the pivot. See, in both the cases we have taken first element and last element as a pivot. Both cases will take order of 1 time, because to choose first element, it will take only 1 time. We can select first element, we can select last element, simply, nothing to do. So the recurrence relation for quicksort algorithm is Tn, n are the number of elements. Okay, T k minus p plus T q minus k plus order of n partition algorithm के लिए, pivot selection के लिए, depending how you are selecting the pivot. Okay, let's take best case of quicksort. Okay, let's take best case of quicksort. Now what will be the best case? See, if these are the elements, see, these are the index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the indexes. What will be the best case of quicksort? If at every level after applying partition algorithm, the sub-arrays are divided into equal parts. If after applying partition algorithm, the array is divided into equal sub-arrays, that will be the best case of quicksort algorithm. Okay, so for best case, what will be the time complexity? Let me write it here. See, Tn is the total time required, equals to T n by 2 plus T n by 2. Means what? After applying partition algorithm, the array is divided into equal subarrays, almost equal subarrays. Plus 1, minus 1, don't bother, almost equal subarrays. Plus, I am taking partition algorithm time, order of n. At every level, order of n time will be required. Plus pivot selection time. In our cases, it was order of 1. If you select first element as pivot, it will take order of 1. If you take last element as pivot, it will take order of 1. So it is our whole recurrence relation. Now after solving, you can apply master theorem also, you can apply substitution theorem also. After solving, it will be n log n. After solving, it will be n log n. That is for our best case and for worst case, for average case. That is for best case and average case, n log n. Okay, let's take worst case of quicksort algorithm. In worst case, what will happen? Suppose there are elements. Let me take it. Suppose 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the indices. Now, after applying partition algorithm, if all the elements are inclined towards one side only, either left or right, either all are smaller than pivot element or all are larger than pivot element. Okay, at every level, it is inclined towards one side only. Okay, so
let us take one example. Suppose it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, it is our array elements. So if you do partition, let me take first element as pivot. Okay, if we take first element as pivot, I have taken first element as pivot. So after applying partition algorithm, all the array elements will be on right side. That is 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and in any order. Okay, after applying partition algorithm, the remaining elements will be on either right side or the left side. Okay, again if you are taking first element as pivot, I am taking first element as pivot, that is 2. Again it is 3 4 5 6 7. Again if you are taking first element as pivot. So at every level, what is happening? At every level, what's happening there? At every level, what's happening there? At every level, suppose it is n. Left side on pivot, it is 0 elements. On right side, n minus 1 elements. Again, left side 0 elements. Right side, n minus 2 elements. Again, left side 0 elements. Right side, n minus 3, and so on, and so on, and so on. Okay, so the time complexity here the time complexity will be t n equals to t of 0 plus t of n minus 1 plus order of n for what? For partition, plus order of 1 for pivot selection. Don't miss it. Order of 1 for pivot selection. Okay, so if you compare order of n is greater, so you can take t0 plus tn minus 1 plus order of n. Now if you solve, it will come as order of n square. So in okay, let's summarize the time complexity of quickshot algorithm. The time complexity of quickshot algorithm in best case will be order of n log n. In average case, it will be order of n log n. In worst case, it will be order of n square. So best case, when the best case will arrive? When the array is divided into almost equal parts. I'm saying. Okay, almost equal parts I'm saying. When will the worst case arise? When all the elements are inclined towards either right side of the pivot element or the left side of the pivot element. Okay. And what is the average case? Mixture of both. Maybe not divided equally, or maybe not inclined equal towards right or left. Mixture of both. Okay. So in this lecture we have learned about quickshot algorithm. We have learned how partitioning is done, how pivot selection is done, how quickshot algorithm works. Okay, so that's all for today. Thank you very much.